are the variance of x and variance of y respectively. Okay, so any problem in understanding this proof? How we have formulated this proof? Any issue? कोई भी डाउट है किसी को? कोई भी जगह पे प्रूफ का? नो, ओके. Then next is okay. So this thing I have already proved, and similarly, if you put b equals to 0, so if you put b equals to 0, then this will be b equals to 0, and this also equals to 0. So that's why this will be reduced as to a square sigma square x. तो इस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा कंपैरिजन में बताता हूँ यहाँ पे. So whenever we are finding out the expectation of ax plus c, so this will be equals to a into expectation of x plus c. ठीक है? So a into expectation of x plus c. But whenever I am talking about this variance, this is the variance of x plus c. So this is basically equals to, so यहाँ पे जो constant term है वो हट जाता है, क्योंकि तुम यदि प्रैक्टिकली सोचोगे ये जो वेरिएंस है ये क्या देता है कि डाटा पॉइंट्स के बीच में कितने वेरिएशंस है. तो यदि कोई कांस्टेंट एलिमेंट है तो उसका तो वेरिएशन क्या होगा? दैट मींस सिंपली आई कैन से दैट वेरिएंस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे तो उसका कांस्टेंट है तो वो तो वेरिएशन कुछ होगा ही नहीं ना. तो वही चीज है बेसिकली. ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ c that will be equals to 0. So b equals to 0, we take sigma square ax plus c equals to a square sigma square x plus a square sigma square. Okay, so this will be equals to a square into variance of x, जो कि ये term है. Okay, and if a equals to 1 and b equals to 0, then sigma square x plus c, so that is equals to sigma square x only. Okay, then setting b equals to 0, c equals to 0, we see that sigma square ax, so that will be equals to a square sigma square or a square sigma square. Okay, and if x and y are independent random variables, okay, then sigma square ax plus by equals to a square sigma square x plus b square sigma square y. And sigma square x minus by, don't think that if it is minus here, then it will be also minus. Don't think that. This will be plus, because I can write down this one as ax plus minus b into y. I can write down here. So if you take minus b whole square, so this will be equals to, so minus b square, so this will be equals to b square simply. Okay, so that's why you can think that ax minus by equals to minus by, so this will be same as this one. Okay, so why this one equals to this one? This that means sigma square ax plus by, so that will be equals to a square sigma square x plus b square sigma square y. What about this term? So I think just previously I have shown you that if x and y are independent, then sigma xy is equals to 0. So as sigma xy equals to 0, so when they are independent, so this will become 2ab into 0. So that's why the covariance part, so that will be equals to 0. So the remaining part is sigma square ax plus by equals to this one only. And ax minus by, then also this will be equals to this. Okay, any doubt? सर लास्ट क्लास आपने कहा था कि वो वेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 वो आप इंडिपेंडेंट वो प्रूफ करेंगे, मतलब एग्जांपल के. हाँ हाँ मैं बोल रहा था ना. हाँ, 2 मिनट. एक एग्जांपल था. 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. हाँ,
ओके हाँ, मैं बोला था कि ये चीज कि इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ओके, if x and y are independent, then the random variable that is equals to, that means this one equals to 0 at expectation of xy. So this will be equals to expectation of x and expectation of y, and the sigma xy, that is the covariance, is equals to 0. But the converse is not true. The converse means converse in general, that is not true, that if sigma xy equals to 0, then xy may be or may not be independent. ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रूव कर देता हूँ. ठीक है, so if sigma xy equals to 0, then xy may or may not be independent. Okay, so एक एग्जांपल के थ्रू, इसका मतलब जब भी हम कोई चीज को मान लेते हैं, let we assume that they are independent. So if we can give a counter example, then that will disprove the statement. ये तो पता होगा. So we'll prove this by giving a counter example. तो कोई भी चीज को यदि डिस्प्रूव करना है, then we can give one example, so that if that will fail, then obviously that will be false. ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल से हम लोग इसको प्रूव करेंगे. इसका मतलब कि हम शो कर देंगे कि सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 0, बट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे हम. ओके, so x and y, then if it will be -1 and 0, okay, and 1, then इसका जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. ये y का है, so h of y for example, sorry, g of x, and here the values of x are 0 and 1. Okay, so this will be 0 and 1 by 3 and 1 by 3 and 0 and ये 0 and 1 by 3. ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसिडर करें. ठीक है, देन सो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ -1, सो इट विल बी h of y. ठीक है, so marginal distribution of 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, and it will be 1 by 3, 2 by 3. Okay, so simple सा example है यहाँ पे. Then if you find out the expectation of x, expectation of x क्या है, 0 with probability 1 by 3, so 0 into 1 by 3 plus 1 into 2 by 3, 1 into 2 by 3, so the answer is 2 by 3. Okay, so now if you find out the expectation of y, so this will be equals to how much, क्या है, expectation of y कितना आएगा, 1 by 3 into -1, so -1 into 1 by 3 plus 0 into 1 by 3 plus 1 into 1 by 3. Okay, so this will be equals to 0, क्योंकि -1 by 3 है और ये 1 by 3 है, तो 0 ऑलरेडी है ही. ठीक है, so what will be the value of expectation of xy, expectation of xy क्या आएगा, देखो, what is the value of expectation of xy, क्या है, कितना है. सो एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे. सो 0 into -1 with probability 0, 0 into 0 with probability 1 by 3, 0 into 1 with probability 0. सो मतलब कि -1 into 0 into 0 plus 0 into 0 into 1 by 3 plus 0
into 1 into 0 plus 1 into minus 1, 1 into minus 1 what 1 by 3 plus 1 into 0 with probability 0, 1 into 0 plus 1 into 1, 1 into 1 by 3. So from here we got that ये तो 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, but this one is equals to minus 1 by 3 plus this one will be 0, ये बाकी सब 0 हो जाएंगे और ये क्या है 1 by 3. तो इससे क्या पता चल रहा है दिस विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और दिस इज जो तुम्हारा नोटेशन है सिग्मा एक्स वाई. So this will be equals to expectation of xy minus expectation of x, expectation of y. So this will be equals to 0 minus 0, this gives you 0. So covariance यहाँ पे 0 है, but are they are independent? Let us check it out. So independent होता तो क्या होता? Independent होता तो क्या होता? Probability of x equals to 0 कितना है? Probability that x equals to 0 equals to 1 by 3 and probability of y equals to 0 is equals to 1 by 3. ठीक है, so probability of 0 x 0 that is 1 by 3 and probability of y at 0 is equals to 1 by 3. But what is probability of xy at 0 0? At 0 0 this will be equals to 1 by 3, which is not equals to probability of x at 0 and probability of y at 0. ये 1 by 9 हो रहा है बट ये 1 by 3 आ रहा है, then they are not independent. ठीक है, so this by using this by giving this counter example we proved that so if sigma xy equals to 0 here then x and y are not necessarily independent. Here x and y are, तो here लिख देता हूँ. ठीक है, here sigma xy is not sigma xy is equals to 0 but x and y are not independent. इसको यदि लिखना है तो लिख लो समझने के लिए. ठीक है, देख लो क्लियर है या नहीं है, कोई इशू है? हेलो, इज इट क्लियर? Am I audible or not? Yes sir, clear. ओके ओके, ठीक है. समझ में आया या नहीं, देख लो एक बार. किसी को डाउट है कुछ तो पूछ लो. कैसे हम लोग प्रूव, कैसे डिस्प्रूव किए, कोई कंफ्यूजन है? No sir. Okay, fine. So here what are the different thing we have discussed here. So एक जैसे कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट है तो सिग्मा एक्स वाई 0 था, बट इफ सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू हियर वी प्रूव दैट एज सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 बट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, और ये वेरिएंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम वेरिएंस रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस थे. ठीक है, तो आई थिंक सब चीज क्लियर हो गया होगा अभी तक. Okay, so let's proceed to the next. There are some examples here.
वो एग्जाम्पल लिखना है या लिख लिया हर कोई? Okay. So consider this example. If x and y are random variables with variances sigma square x equals to 2, sigma square y equals to 4, and the covariance sigma x y equals to -2, then find the variance of the random variable z, that is equals to 3x minus 4y plus 8. So here this is a function, that means function of the random variables x and y, linear function. Then find out the variance of this. Can you find it out? So sigma square z, which is equals to 3x minus 4y plus 8. So this will be equals to क्या होगा? According to the formula, this will be equals to 3 square into x sigma square x plus 4 square या minus 4 square into sigma square y. Then यहाँ पे क्या होगा बताओ तो? Plus 2 into 3 into minus 4 into sigma xy. Is it correct? So the value will be equals to 3 square is 9 into sigma square x means 2 plus 16 into sigma square y, so that is equals to 4 plus 2 into 3 into 6 into minus 4, so minus sign will be here, so into sigma xy is minus 2. Okay, so this will be equals to so minus here, minus plus here, because sigma xy is minus 2 is given to you. Is the answer correct? Please check it. Yes, sir. Okay, ये क्वेश्चन ऑल ऑफ यू ट्राई इट. आई आस्क, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? What is the answer? Sir, 30. 30 आ रहा है. Variance of z. So this will be equals to क्या है? Suppose that x and y are independent. So as they are independent, so sigma xy is equals to
0. So variance of z will be 3 square into sigma square x plus 4 square into sigma square y. So this will be equals to 9 plus sigma square x is 2 plus सर 2 स्क्वायर होगा 16. ना 4 स्क्वायर नहीं 2 square का ऑलरेडी 4 लिखा हूँ, फिर 2 square करना है, minus 2 square, so 4 into sigma square y is 3. 18 plus ठीक है ना? यस सर Okay. Okay. So the question is, the total time measured in 100 hours the teenagers run for hair trial over a period of 1 year is a continuous random variable x. That is the density function, this one. Evaluate the mean of the random variable y, that's equals to 60 x square where y is equal to the number of kilowatt hours expended annually. Okay, solve कर सकते हो? So you have to find out the mean of the random variable y. That means you have to find out the mean expectation same term. So expectation of y. So this will be equals to क्या होगा? So y equals to this one. So expectation of 60 x square plus 39x, and this will be equal to x 60 into expectation of x square plus 39 into expectation of x. So from here you have to find out the expectation of x square and expectation of x. Both things that you have to find it out. Okay. So first of all, find out the expectation of x. So yes, expectation of x कितना होगा? How to find it out? What will be expectation of x? So integration of minus infinity to plus infinity fx dx in general. Okay, so x fx dx. Then what you have to do? X fx means in place of x. So this is because to integration of anywhere else value will be 0. So integration of 0 to 1 x into, so the small fx is also equals to x. Okay, so this will be equals to x square by 2 from 0 to 1. Okay, then plus okay, sorry, it's just so plus integration of 1 to
2 from okay, so x square by 2 plus, so this will be 2x minus x square by 2. Okay, okay, then this will be equals to 1 by 2 then plus 2 into, so this will be equals to 2 into 2, so 2 into 2 minus 2 square by 2 minus, if you put 1 here, so it will be 2 plus 1 by 2. Okay, so solve it. 1 by 2 plus 4 minus 2 minus 2 plus 1 by 2 तो 1 ठीक है जो भी है हाँ ठीक है then what is the value of expectation of x square ठीक है all of us find out what is the value of expectation of x square you just find it out and tell me जो लोग भी सॉल्व किए हो एटलीस्ट चैट बॉक्स पे लिख लो सो दैट आई कैन नो दैट ऑल ऑफ यू एटलीस्ट यू आर डूइंग ओके okay 7 by 6 na I think you got the correct one okay fine ठीक है so the value that you got that is equals to 7 by 6 okay so all of you also check that whether this is correct or not okay then what you have to do expectation of y so that will be equals to expectation of y so this will be equals to क्या है 60x square plus 39x so 60 into expectation of x square plus 39x okay so the total time so this is the mean of the random variable this and what you have to do the y is the equal number of kilowatt hours expended annually so यदि तुम चाहोगे कि कितने आवर्स है टोटल so ये तो हो गया तुम्हारा expectation of y because 1 unit that is equals to 100 hours you know that 1 unit is equals to 100 hours so 109 units that is equals to 10900 hours ठीक है इतना आवर्स का हाँ समझ में आया या कोई डाउट है किसी को
Suppose that x and y are independent unknown variables having the joint probability distribution that is equal to this one. Then find out the expectation of 2x minus 3y and expectation of xy. All of you try to do it. ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने का इतना कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला से हिसाब से सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर. ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई. देखो एक दो करने से नहीं होगा. All of you must try. आयुष प्रसाद, आयुष प्रसाद, अलेख कुमार परिड़ा, you all are absent. भूमिका जना, no one answers. अर्पण, ओके ठीक है, कोई तो आंसर नहीं दे रहा है. सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? या कहीं पे डाउट हो रहा है तो भी पूछो, मैं बोल रहा हूँ बार बार. ना सॉल्व करते हो ना कुछ करते हो. एटलीस्ट यदि बोल नहीं पा रहे हो तो आंसर Sir, for A part it's minus 2.6. So you are saying that the answer of A is expectation of 2x minus 3y that is equals to कितना है minus 2.6. Okay. And B part is 9.6. Okay. ठीक है. 9.6 हाँ करेक्ट. किसी को कैसे आया, क्या हुआ, समझ में आया या नहीं आया तो पूछो. सिंपल सा चीज है कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x minus 3y, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into expectation of x minus 3 into expectation of y. So just find out here expectation of x and expectation of y. ठीक है, expectation of x and y find out करने के बाद expectation of x के लिए तुम्हें क्या चाहिए, marginal distribution. Okay. So and expectation y के लिए marginal distribution of y चाहिए.
उसके हिसाब से यूज करके सॉल्व कर देना, ठीक है। ओके ठीक है। Then there is important theorem here. There is important theorem here, that Chebyshev theorem. Okay. So what is this Chebyshev theorem? Tells you that. ठीक है, बाकी पार्ट हो गया सबका, कोई डाउट नहीं है, चलो को तरफ जा सकता हूँ। ओके फाइन, तो कुछ बोल रहे थे क्या? So next is the Chebyshev theorem. So this theorem tells you that the probability that any random variable, here it is not mentioned that x is follow this denominator, this, that, कुछ भी नहीं। Okay, x will have a value within the k standard deviation of the mean is at least 1 minus 1 by k square. That means the x that lies between x minus mu sigma to x mu plus k sigma, that probability is greater than 1 minus 1 by k square. या तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x lies between mu minus k sigma to mu plus k sigma, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, this will be equals to probability of mod of x minus mu, okay, minus mu, so that will be equals to, that is mod of x minus mu is less than 2 sigma, k sigma. ओके क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगाने से भी तो वो तुम्हारा वो सही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू इज लेस देन x is k sigma. Okay, so यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन x के बारे में, x किस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, x कैसे उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमें पता नहीं, फिर भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो k का जो वैल्यू है किसके बीच में, क्या म्यू प्लस के सिग्मा टू म्यू माइनस के सिग्मा के अंदर यदि रहने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। So how to prove it? So what I have to do, I have to some calculations here. So okay, so let us compute it. So we have that sigma square plus to expectation of x minus mu whole square. And so this will be equals to then so this will be equals to, I can say this is equals to minus infinity to mu minus k sigma fx x minus mu whole square into fx into dx, okay, plus integration of mu minus k sigma to mu plus k sigma okay, then
plus integration of mu plus k sigma to infinity into x minus mu whole square fx dx. ठीक है, सो इसको जस्ट जो हमारे पास इंटीग्रेशन था x माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स था, so I have just splitted अच्छे से that is equals to integration of minus infinity to infinity x minus mu whole square so now what can we do? So here as you can see this is a positive quantity because x minus mu fx is a positive quantity, x minus mu whole square that is a positive quantity because if is there any negative sign here then the square will nullify that. Okay, so x minus mu whole square that is equals to x minus mu whole square into fx. So as per the x minus mu whole square is a positive number and fx that is also a positive number. Okay, then what we have to do, we have to just remove this part from this integration. So obviously यहाँ पे देखो ये टर्म है पार्ट ए टर्म, यदि बी टर्म है देन सी टर्म, ए बी एंड सी तीनों को टर्न करोगे तीनों को ऐड करोगे then only this becomes equal to this. So now what I will do is this is a plus b plus c is that. Okay, a plus इसका जो वैल्यू होगा a then b plus c and a plus b plus c, so that is यदि है तो b यदि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो obviously this part is greater than or equal to a plus c. Can I write down or not? Because एक कोई जो b है वो तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनको तो नॉलिफाई करके और घटा तो नहीं देगा, तो ऑब्वियसली बात यह है कि इफ ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स so so x minus mu whole square is equals to greater than 0 and fx greater than 0 as both are positive. ठीक है, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा इसको हटाने के बाद दिस टोटल क्वांटिटी so that will be greater than or equal to minus infinity to mu minus k sigma into x minus mu whole square into fx dx. Okay, plus integration of mu plus k sigma to infinity into x minus mu whole square into fx into dx. Okay, this is the पहले बोलो कि ये वाला छोटा सा जो मैं चेंज किया हूँ इसमें समझ में आया या नहीं आया, यदि नहीं समझ में आया तो आस्क मी. यहाँ तक क्लियर है? ओके, देन तो यहाँ पे रीजन्स भी लिख सकता हूँ since the second of 3 integral is non-negative.
And what we have, okay, so whenever I'll say that x is less than equals to mu minus k sigma, and x is greater than mu plus k sigma, so this is basically means you that x minus mu is greater than equals to k sigma. Yes or no? Or I can say that x minus mu whole square, so this is greater than equals to k square sigma square. ये सब पता है या नहीं, कोई डाउट है? देखो सिंपल सा एग्जांपल से फिर भी बता देता हूँ, पता नहीं किसको मुझे पता होगा। सोच लो कि ये म्यू माइनस के सिग्मा है, इसको मैं फॉर एग्जांपल ए से डिनोट करता हूँ, ए इंटरवल ए एंड इंटरवल बी, ठीक है, ये तुम्हारा जीरो है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो जीरो है, तो यहाँ पे देखो x is less than mu minus k sigma and x is greater than mu plus k sigma. Okay, so x is less than mu minus k sigma, so a is this one, b is this one, so ये तुम्हारा a हो गया। ओके, देन ये तुम्हारा बी है, कौन सा, म्यू प्लस के सिग्मा से एक्स ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली कौन सा रीजन होगा तुम्हारा, ठीक है। सो एक्स लेस देन माइनस एक्स माइनस के सिग्मा एंड ग्रेटर देन दिस। ओके, सो ये तो यहाँ से जब भी हम इसका मतलब इसके अंदर यदि रहता, then I can say that x minus mu is less than k sigma, ठीक है। बट यहाँ पर जब भी हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं बेसिकली, सो हियर x माइनस म्यू, इसका मतलब कि जो x माइनस म्यू पोजिशन है वहाँ से इनका जो पॉइंट्स है, उनका जो दूरियां हैं वो ग्रेटर देन k sigma हो जाएगा आफ्टर इन दिस इंटरवल, ठीक है। सो जैसे कि मॉड ऑफ x माइनस वन इज लेस देन 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका मतलब कि x माइनस वन इज इन बिटवीन -2 to 2। सो इसका यदि हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसका मतलब कि इसके इनके बीच में है -2 to 2, सो यदि कॉम्प्लीमेंट लेते हैं देन दैट इज इसका जो कॉम्प्लीमेंट एरिया होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस लाइन एरिया। So that's why what I have done that x minus mu is greater than k sigma, okay, and is greater than k square sigma। समझ में आ रहा है यहाँ तक? धीरे धीरे पता चल जाएगा ये सब क्यों कर रहा हूँ, बट यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ओके, ठीक है, ओके, सो दिस इज द part 2, this is part 1, okay, so substituting the 2 in 1 we get that so substituting 2 in 1 we get sigma square is greater than equals to k square sigma square from minus infinity to mu minus k sigma f(x) dx plus integration of mu plus k sigma to infinity
fx dx. Okay, so and this value is equals to k square sigma square into, so ये क्या है in terms of probability? I can write down here as probability that the random variable x is less than equals to mu minus k sigma, then plus probability that x is greater than equals to mu plus k sigma. Okay, so from here what we got, so this will be equals to k square sigma square into probability that mod of x minus mu is greater than k sigma. Okay, mod of x minus mu is greater than k sigma. That is, this will be less than or equals to 1 by k square. So what we'll do, so the probability of x minus mu is greater than equals to k sigma plus probability of x minus mu is less than k sigma, this into 1. So this is equals to 1. So what we get, the probability of mod of x minus mu is less than k sigma. So this will be equals to 1 minus of probability of mod of x minus mu greater than equals to k sigma. Okay, and this is greater than equals to 1 minus 1 by k square, and this will be equals to probability that mu minus k sigma is less than mu plus k sigma. So this will be greater than equals to 1 minus 1 by k square. So this is actually the proof of the Chebyshev theorem. ठीक है, जस्ट रैपिडली मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग किए. फर्स्ट ऑफ ऑल we just found out what is the meaning of this. ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर हम कंसिडर किए, क्या डेफिनेशन है उसको लिखे in our continuous case. Then we have splitted this integration into 3 parts, and the middle one, so that will जो बीच में है ये वाला पार्ट एक्चुअली पॉजिटिव क्वांटिटी एक्सपेंस हुआ में म्यू होल स्क्वायर पॉजिटिव है, fx is also a positive quantity by the definition. So simply integration that will be equals to हम लोग क्या किए उस पार्ट को as a positive quantity, so we have removed it. But actually basically we want this one, that mu minus k sigma and mu minus k sigma square, that is equals to this one. ठीक है, प्लस दिस वन. तो ये पार्ट को हम लोग टोटल इंटीग्रेशन से हटा दिए. So obviously there are three terms are there, a b c. So obviously a b c is greater than a and c. ठीक है, so वही उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें. ठीक है, देन x लेस देन इक्वल्स टू k माइनस सिग्मा एंड x लेस देन इक्वल्स टू म्यू प्लस k सिग्मा. तो इन दोनों को यदि एक करेंगे तो क्या होगा वही बताया मैं पहले. तो x1 mod is less than 2 मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज mod of x minus mu is greater than 4 5 जो. Then x minus mu is less than k sigma. Then for that substituting 1 and 2 that we got sigma square is greater than k square sigma square. ठीक है, तो 1 क्या था तुम्हारा, 1 ये वाला पार्ट था, तो 2 क्या था x minus mu whole square is greater than equals to k square
sigma square. Okay. The sigma square is greater than 1 square sigma square. So now just to put the value of k here. So by doing so, by proceeding this, so if what we got, the probability of x sigma square is greater than 1 minus 1 by k square. So accordingly, if you solve it, then you can get that this is equal. So probability of x minus mu is less than x and less than mu plus k sigma. That value equals to 1 minus 1 by k square. Is it okay? ये प्रूफ नहीं तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी. ये प्रूफ जो है मैं डिटेल में भेज दूंगा तुम्हें. यदि कोई भी फिर भी इशू होता है देन यू कैन आस्क, ठीक है. इज इट ओके? ओके, ठीक है. तो आई एम लीविंग द मीटिंग. थैंक यू.